50 देशों से आए, तो 50 देशों में संदेश वाहक बैठे हैं, संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। और अभी प्लान भी अच्छा बना रही है कि जहाँ भी संदेश नहीं पहुँचा है वहाँ निमित्त बनना ही है। कर भी रही है, ये भी बाप दादा के पास पहुँचता है। अभी उमंग उत्साह है, और जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता है। तो डबल विदेशी कौन हो? सफलता के सितारे, है ना? सफलता के सितारे अच्छा कर रहे हैं। एक एक के दिल का आवाज बाप दादा तक पहुंचता रहता है। ये करे, ये करे, ये भी करे, वो भी करे। उमंग उत्साह अच्छा है। और सफलता तो होनी है। आपके चरणों में, गले में सफलता है ही है। और आप सबको देख करके सभी खुश भी होते हैं, आह्वान करते हैं आपका डबल विदेशी जरूर होने चाहिए। लाडले हो गए हो ना, तो बहुत अच्छा कर रही हो, करते रहेंगे, और रहे हो, और आते रहेंगे। सब टीचर्स बहुत उमंग में है ना। देखो आपके उमंग उत्साह से ये महान अधिकारी आत्माएं भी पहुंच गई। ग्रुप अच्छा लाया है, जिन्होंने भी लाया है उनको मुबारक। क्वालिटी अच्छी लाई, अभी और आवाज फैलेगा जरूर। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बैठ जाओ। चारों ओर के चाय साकार रूप में सामने है। चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को
पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। अव्यक्त इशारे। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। सभी को ओम शांति। सब ठीक है, मौज में है, खुश राजी हैं। जीवन में संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कह रही थी सबको कि एक संतुष्टता होती है स्वभाव की और दूसरी होती है कार्य की। जो हमने किया क्या मुझसे संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं ना संतुष्टता में, स्वयं का, बाबा का और परिवार का। सबसे ज़्यादा किस में मेहनत है? परिवार की संतुष्टि में नहीं। तो इसलिए अपवित्रता दिव्यता के रूप में भी बदले। जितना जितना पवित्रता या शुद्ध होते हैं, मन भी शुद्ध, वृत्ति भी शुद्ध, दृष्टि भी शुद्ध। जैसे नेत्रों में हमारे वो ट्विंकल कहें, स्पार्कल कहें, ज्योति कहें, मतलब जैसे आंखें हमारी बहुत क्या कहें, क्लियर हो जाती है। जनरली मन की उलझन, मन की चिंता, किसी बात का भय, भविष्य का संकल्प, हमारे नेत्रों में वो रिफ्लेक्शन आती है। तो पहले पहले तो हमारी दृष्टि में फर्क पड़ता है। फिर जो चेहरा है उसकी जो पवित्रता से चमक है, उससे जैसे सतयुग में दिखाते हैं कि 2 क्राउन है। एक पवित्रता का, लाइट का, जिसको होलीनेस बोलते हैं, और दूसरा रतन जरित, जिसको हाईनेस बोलते हैं। तो कहते हैं ना, होलीनेस एंड हाईनेस। तो जितनी पवित्रता है उतनी महानता है। पवित्रता ही महानता है। और अब तो बाबा ने पवित्रता वरदान में दे दी ना। अपना अनादि स्वरूप, अपना देश, सब राज्य, जहाँ भी हम हैं,
पहला गुण है पवित्रता का। इसलिए संगम युग पर बाबा की मर्यादाएं, भोजन की पवित्रता, संबंध की पवित्रता, धन की पवित्रता, हर प्रकार की पवित्रता मर्यादाओं के रूप में बाबा ने हम सबके सामने रखी है। क्योंकि मर्यादाएं से जो मनुष्य की ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां वो संयम में रहती हैं। कल तो बाबा ने कहा आपका जो कर्म है, आपकी कर्म इंद्रिय हैं, उनमें भी पवित्रता, पवित्र कर्म करने का वरदान है। तो बाबा ने हर प्रकार से पवित्रता को वरदान समझो तो वो नेचुरल होती जाएगी। तो आज बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। ऐसे तो सारी बॉडी, हाँ, लाइट नहीं कहते हैं ब्रह्मा बाबा को। कोई आए, हमला करने के ख्याल से आए, तो उनका लाइट रूप देखा, और जब लाइट रूप देखा तो वो एकदम डर गए। तो उनके हाथ में जो हथियार था वो गिर गया। तो ऐसे लाइट स्वरूप बनते जाना है, वो पवित्रता से होता है। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। देखो, कन्या की पवित्रता है, हाँ, तो भी कन्या को नमन करते हैं, अष्टमी पर पूजा करते हैं। राइट। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हैं। ऐसे देखो, हाँ, किसी ने कहा कि आप लोगों की पवित्रता ऐसी है, जैसे बहुत बड़ा पॉट मीट का, उसमें थोड़ा केसर डाल दो। तो मैंने बोला कि वो केसर का ही वो टेस्ट रहेगा। तो चाहे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कैसे विश्व पर उसका प्रभाव है, पर अंत में वो प्रभाव निकलना ज़रूर है। तो बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया का परिवर्तन करते हैं। आज बता रही थी जयंती बहन की, जब पाकिस्तान से निकल रहे थे, शिप में बैठ रहे थे, तो बहुत सारे लोग आए और कहते हैं आप तो पाक लोग हो, पवित्र हो, अल्लाह की मददगार हो, आप क्यों जा रहे हो हमारे देश से। दूसरे धर्म वाले, कट्टर विरोधी, और पार्टीशन हुआ, ये लोग निकले नहीं। जब बाद में निकले तो वहाँ वालों ने बहुत मदद की। नहीं, आपने सुना है कि जहाज़ में 1 साल का साबुन, तेल, जो भी खर्चा रोज़ रोज़ की यूज़ की चीज़ें वो दी उनको। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों से, के बंधन से छुड़ाती है। मन की पवित्रता है, फिर सर्व कर्म इंद्रियों की पवित्रता है, दोनों जरूरी है। राइट। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा लेती है। जो विकर्म है वो क्या है? कभी मन का बंधन, तन का बंधन, संबंध का बंधन, ये सब विकर्मों के बंधन है। तो पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। बाबा ने कहते थे बाबा कि जिनको पवित्र रहना चाहिए था, साधु संत सन्यासी, उनका भी नहीं रहा। एक गृहस्थी को भी 50 वर्ष के बाद पवित्र रहना था, उन्होंने भी नहीं किया। तो भी मैं अपने बच्चों को कहता हूँ करो।
सृष्टि को थमाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए रहे। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इससे इसके महत्व को जानकर पवित्रता की लाइट का क्राउन धारण कर लो। आत्मिक दृष्टि, पवित्र दृष्टि, हर प्रकार की पवित्रता से चेहरे पर क्या आ जाता है? लाइट। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या करना है? क्राउन। देखना कल सवेरे जब उठेंगे तो आपके चेहरे पर क्राउन है। हर्षित चेहरा हो, मन एकदम हल्का है, बाबा की याद में है, तो चेहरा बहुत अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत सुंदर होते जा रहे हैं, अच्छे होते हैं, यंग लगते हैं। वो सब क्या है? पवित्रता की लाइट। तो पवित्रता का क्राउन हमें धारण करना है। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिविजन 1969 से। ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त वाणी तारीख है 15 अक्टूबर 1975। आत्मघाती महापापी न बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियां। बाप आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मुख्य बात है बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है। गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सके और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला सके। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगा सके। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उनकी आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप में दे सके। सर्व बातों में बैलेंस रख सके, अर्थात अभी अभी लवफुल
और अभी अभी लॉफुल बन सके, अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतला रूप बन सके। ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न, इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। पहली बार मधुबन में आया था तो रात्रि की क्लास थी, तो उसमें रात को जब क्लास समाप्त हुई तो हम लोग अपने रेस्ट के लिए अपने अपने कमरे में गए। तो बाबा ने उस रात को मुरली के बाद कहा कि बच्चे, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको एक चिट्ठी लिखनी है। आप लोगों ने अनुभव किया है, उनको भी आप निमंत्रण दें कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में कैसे नए संसार की नई सृष्टि की, सत्य की दैवी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। आप भी अपना पूरा वर्षा लो, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसा एक उसको पत्र लिखना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि वो यहाँ आए और अपना इस बात को समझे और वर्षा प्राप्त करे। तो बाबा ने ये आदेश दिया और फिर पूछा कि अच्छा कौन कौन लिखेंगे। तो हमने भी हाथ उठाया कि हम लिखेंगे। उसमें कुछ लोग और भी थे। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे लिख लाना और फिर कल सुबह को दिखाना। तो हुआ ये कि जब हम अपने कमरे में गए तो लाइट ऑफ हो गई। तो अब सुबह की क्लास उन दिनों में मेरे ख्याल में 4:30 बजे होती थी, 4 या 4:30 बजे। 4 से 4:30 योग होता था। उसके बाद मम्मा आती थी, वो मुरली चलाती थी, फिर उसके बाद बाबा आते थे। ऐसे ही क्लास का टाइम था। तो सुबह तो नहाने धोने और तैयार होने में टाइम लगना था, यही टाइम था लिखने का। तो हमारे कमरे में और भी थे, उन लोगों ने भी सोचा था कि हम भी लिखेंगे। तो वो कहने लगे कि आप कैसे लिखेंगे, अब तो अंधेरा हो गया है, चलो सो जाते, फिर कल देखेंगे। बाबा कहेंगे तो बाबा को कह देंगे कि बाबा वो तो अंधेरा हो गया था। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा का ये हमारे लिए पहला आदेश है। ये सदगुरु कह दीजिए, टीचर कह दीजिए, पिता कह दीजिए, उनका पहला हमारे प्रति फरमान है। और हम कहेंगे कि हम नहीं करेंगे तो ये तो अवज्ञा करने की आदत पड़ जाएगी। और शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको जरूर मालूम रहा होगा कि भाई लाइट चली जाएगी। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप लिख लाना, तो हम तो लिख के जाएंगे। तो उन्होंने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया कि अजीब सा आदमी है, अंधेरे में कैसे लिख जाएगा, कोई बिल्ली जैसी आंखें थोड़ी है इसकी जो लिख के जाएगा। तो मेरे ऊपर मजाक आपस में 3-4 थे वो, उन्होंने तो अपना एक ने कुछ कहा, क्या याद नहीं मुझे, तो आपस में हा हा करने लगे, वो अट्टहास करने लगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपना अपना विचार है, मैं तो इस बात को करूंगा। तो फिर एक टार्च, ये विश्वरतन भाई हैं यहाँ पर, ये उन दोनों टार्च दिया करते थे जिनके पास नहीं होती थी। इन्होंने हमें एक टार्च दी हुई थी, क्योंकि वो जो जगह थी उसकी जमीन ऊंची नीची थी, पथरीली जमीन थी, किसी का पांव ठीक जगह ना पड़े तो मोच आ सकती थी। उन्होंने हमें टार्च दी थी। तो मैंने सोचा मैं टार्च ऑन करके लिख लूंगा।
जैसे ही टार्च की वो भी वैसे ही गुल थी। तो वो बिल्कुल इतनी मध्यम थी, उसके सेल पता नहीं किस जमाने के थे, तो वो भी कुछ ऐसे नहीं थे कि उसमें लिखना संभव हो। तो जब मैंने टार्च ऑन की तो वो और एक दफा हंसे, जैसे अभी आप हंसे, तो वो भी मेरे पर हंसे कि ये खाम खा का व्यर्थ कोशिश कर रहा है। तो फिर एक दफा कहका हुआ मेरे ऊपर, तो मैंने कहा भाई मैं लिखूंगा तो सही। तो मैंने देखा कि वो जो नीचे रोड है, रोड पर स्ट्रीट लाइट, तो वो मैंने रोड लाइट जब देखी तो मैंने सोचा कि वहीं जाके लिख लेते। जैसे आजकल कड़ाके की सर्दी है, वैसे ही कड़ाके की सर्दी थी, यही दिन थे लगभग। तो आपकी पहचान वही, हाँ योग वही, हाँ ज्ञान वही, हाँ सद्गुण के वरदान वही, मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते श्रृंगारे। Om Shanti. Adopt the personality of spiritual royalty and purity. Wear your crown of the light of purity. The power of purity makes you supremely worthy of worship. You transform this impure world with the power of purity. The power of purity cools down souls who are burning in the fire of vices. It liberates souls from the bondages of vices for many births. From the Copper Age onwards, this world has been supported a little on the basis of purity. Know the importance of this and wear your crown of the light of purity. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 11. Adopt the personality of spiritual royalty and purity. Today's topic: wear your crown of the light of purity. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. Purity also keeps us happy, right? So we all are happy, very happy, right? Purity brings clarity, right? In purity, everything looks clean. If you look at clean water, you can see at the bottom. Even in the ocean, right? When it's clear, you can see until what. When it's clean, you can see everything, see through, right? What we call it. So always it's like there is a saying, mind is the, face is the index of mind. So when there is purity in the mind,
is also visible in your face, in your eyes. And it's different face completely, very alaukic, very spiritual, comparative to laukic faces. A vast difference. That is why many people say Brahma Kumar Kumaris, they never age, right? They look young, they look beautiful, right? It's because of purity. Because purity is also truth, right? So that is why I say Satyam, Shivam, Sundaram. Truth is benevolent and also beautiful. So Baba is saying that purity at confluence stage is the blessing of Brahman life. And he reminds us of all our eternal purity, of our where we live, our religion, and our self-sovereignty. So Baba says, wear your crown of light of purity. The power of purity makes you supremely worthy of worship. People will not only bow, very naturally, people in India will start folding their hands. They do salutations very naturally. So Baba is saying, make you worthy of worship. You transform this impure world with the power of purity. Transform impure world with the power of purity. The power of purity cools down souls who are burning in the five vices. It many souls do say. Uh, one soul came, very prominent person. So after a day or two, he said, I used to be so angry. People at job used to be scared of me. And now I don't. I'm very cool and they are amazed, right? So Baba says, your purity cools down the five vices, the fire of five vices. And it, Baba says, then it liberates souls from the bondages of vices for many births. From the Copper Age onwards, the world has been supported a little on the basis of purity. Shankaracharya came, and after that, many followers, they all were hermits. No? They lived the life of purity. So Baba always mentions that world was supported by purity of these religious leaders. So know the importance of this and wear your crown of light of purity. Even if when we use word pure, many people don't relate. Many people, when they come to Madhuban, they share experience. We experience peace, we experience love, we experience happiness, lightness. And when they find out that how, uh, whether brothers, sisters, they live together, whether it is families, couples live together, but they are all pure. Not only celibacy as purity,
but also their drishti, soul conscious drishti. Our speaking to each other, very sweet, very lovely, powerful because of purity. So when they come to know, they realize that how important it is to have a pure life. One time about a few very important gurus had come to Madhuban. And when they realized the life of Dadi, Prakashmani and others, the life of purity, he spoke and said, I have never experienced this kind of purity. So then that time was time of Rakhi. Dadi Prakashmani tied Rakhi on his hand. Generally, hermits don't allow that to happen. He said, no, tie, because from today, 200,000 sadhus will be your brothers. So purity brings transformation. You don't have to say anything. Once we were traveling in Brazil from one city to another. And at that time, it was nothing like no smoking, right? So they smoke, they drink. So person sitting next to me just asked me, is it bothering you? I said, of course, smoke is smoke. So he said, okay, I won't smoke. And next seat, my other BK was there. And she started giving like a talk to him. It's not good to smoke, all that. And he keeps smoking and she keep talking. And flight landed in 1 hour. So what helps? When you are image of purity, I have experienced many times when people next sitting, these days we always have someone sitting non-veg, they immediately say, must be bothering you. Say, well, if you have to eat, you have to eat, right? So purity does touches others, that what they shouldn't be doing, right? So when Baba says transformation happens through our purity, and it will definitely show more and more that how that happens, and you all will have many, many experiences. So Baba is encouraging us to wear the crown of purity and what it means, right? Light on your face, sparkle on your face, divinity on your face. So immediately, like looking at Brahma Baba, when he will drive in Bombay, when he will walk on the beach of Bombay, many will go past him. Then they turn around and they want to see, because they felt there is some vibrations, very alaukic, spiritual. And that's the purity, right? Spirituality. You don't look same. Okay, so keep to your blessing of purity. Om Shanti. Om Shanti, dear Mohini Didi. Greetings from a pure flower, very, very white and pure. Very A beautiful. beautiful jasmine. Hope you're doing well, fresh like the flower. This is Very, it. That's very beautiful. Thank you. very nice. It's an incredible smell for you. So yes, purity is has so many aspects, and I was thinking, I think I have a good topic for you today, because connected to purity sometime is our state of mind
reacting to certain situations. And I was asked recently, how do you respond to criticisms? If people criticize you, I was asked, so how do you handle being criticized? So I shared, okay, a few points, but then it made me think, how about me? Do I criticize other people? And do I even criticize people in a very nice way, in a very royal way? Because sometimes it's like, we say, oh, I'm just giving an example. And then we show something that was not done properly. But the person may know, oh, he's talking about me. And it's almost like we're not directly criticizing, but actually we are criticizing. Or sometimes we share with someone to say, oh, yeah, but this happened, and this sister, she did that again. So we criticize. I mean, I realized I was doing it a little bit, and I thought, wow, okay, this is not purity of. So my question to you is, how do we notice something is not right, and how do we address it without being critical? There are two things. One is as soon as you are criticized, look at yourself and see that whatever is being said, do I need to bring some changes in me or I need to be better, right? So definitely response will be, well, I will do better, or in a very positive way. But if you find that's the habit of that person, because some will always find, they say fish and thorn in the fish, like they will always find something where they can say something, right? And I consider that the habit of that person, I don't take it. Is the sanskar of that person will always say something to correct you, because that person has to correct whatever happens. So I think that I could handle criticism very well since I was young Brahmin. I know I have mentioned before, once we were in temple, sitting in a circle, we were about 18, 20 main instruments or teachers, and Dadi Prakashmani had come there. And someone said something which for me was never part of me. But because she had interest in that, so she brought up that how I take it or all that. And I didn't even in the mind reacted to anything. So Jayanti Ben came to me in the end and she said, how come you didn't feel bad, or that person shouldn't have said it? I said, it doesn't connect with me because I am not that. And everyone came to congratulate me that I didn't respond or said anything. I said, no, I won't, because, whatever she said is her sanskar, right? Why should I take it? So, recently, one time I was offering bhog. One thing Baba said about Ratanpuri Dadi, whatever situation happened, whatever a person did, she never took it to heart or to brain. But also, I never heard her say anything about anyone. Never. And I was surprised because when you take it in mind, you will sit and talk about it, right? Somewhere. But she never did. Either she will talk about Baba, she will read Morley, and that is why the way she left body in that stage of Karmatit where she was carefree and she was like in golden age, and because of not having this habit. So I'm just saying that definitely one is how do I respond? Other is I should see, am I saying something about anyone, that it becomes criticism. Plus, when we speak about someone sitting with other person, the vibrations will reach that person. And that person will feel, internally the energy will be different.
because we are criticizing or saying something. So both ways, our response to creation, to criticism, and our own nature of criticism, we have to pay attention on both, right? And I think that when you see it that this person will anyway say something, then you don't care, in the sense of it becomes your habit. You can help that person to stop it. If not, it's all right. You don't feel bad about it, but you feel mercy on that person, that hope this person can calm down and not have this habit of always finding something which is not right, because that becomes a habit too, right? But to appreciate and to acknowledge, I think it's very, very good support, strength, and habit also. But then do you think that this is only possible if our ego is sleeping or not not present? Because why would we react to a criticism? Is it just ego that, because lack, sometimes people do react, right? lack of self-respect and self-trust, right? If there is self-respect, whatever people say, you stay in your self-respect plus self-trust also. I think both qualities definitely help. And of course, when there is no self-respect, there is ego, right? But maintain self-respect so that ego doesn't appear. So if, let's say, on the other side, I catch myself criticizing someone in a nice way, a very polite way and very, very, What is just the little nice chit way? chat with someone. So what should I understand? That again, this is my ego. Like, where should we move from the thought of saying, okay, this person did that. I don't agree. I don't think it should have been done, which is in a way a criticism. How do we change that? Where should we go to not do that? If you are a person who is constructive in the sense of you always want to maintain things in a very beautiful way, then one is to oppose, another is to propose. So instead of saying this shouldn't have happened, this shouldn't, when is the right time, you propose what is the right thing, what is the right way, so that proposal definitely will stay in the mind and intellect of other person. But if you criticize, I don't think people catch it. I remember one time Dr. Satish Gupta was here. So he had a pen in his hand and he gave to other person, and that person couldn't hold it, it fell. He took back the pen and again gave nicely and he could hold. So he was saying anything you say, not in the right words, is never taken. It will fall. It won't help that soul. But if you say it sweetly and nicely, that person will hold it and would like it and take it. So then again, how do I help and create the atmosphere where we all are helping each other instead of criticizing, right? Yesterday, I think I was sharing some people, their own thinking, their own way of coordination, their own way. So if you could help, you help. But then you say, okay, you have started, you deal with it. But two qualities are required. One is cooperation, other is give sakash. Okay, so much work is going on. It's a hard work. I give my good wishes. I give my sakash, right? So we have to make our nature, whether I'm criticized or not is another thing. But we have to be what kind of atmosphere we want, what kind of, when we do it, we don't realize that others are also involved, right?
So then it becomes like a, because one time Dadi Janki came to New York, and one thing she said, I liked it and I underlined it. When I come here, there is no garbage, in the sense of people don't talk about each other, they sit and gossip. And so I underlined it, and I had told everyone, if you see any problem, something is not right, come and tell me. Don't sit and talk amongst yourself, it won't help. And since then, there is a habit, people will call me. I asked for bhog second time, I didn't get, or this sister got little upset, I didn't like it, but not amongst themselves. It's not, it doesn't happen at all, but I'm just giving example that then the relationship and atmosphere remain very open. Once you are able to accept the criticism or what is not right, listen to it. I think that it works very well. Mm. Well, I think it works well for you also because, I'm saying very sweetly, but sometimes what is discouraging is when we see your life and the daddy's life, all the Didis and daddies, it seems like you started from already okay and you just went to better. But for us, it's like, I understand what you're saying, but I think it's easy to do it if we don't have to fight our own ego. But if my ego is activated, even if I say to myself, "Oh, I should propose instead of opposing," it may not sound truthful because internally I'm still reacting. And what I find sometimes a little bit difficult is how to really react. I know how it should be a proper reaction, but I can feel the little ego is still, he's spoiling everything because it's not true. If I say to someone, yes, I agree, but if it's not true, it doesn't sound right. So I know for you, when you share those examples, it seems to me that you were not fighting with your ego at the time. That's why you didn't feel offended by the criticism. And I'd never heard you criticizing anyone, but I know it's your nature. But for us, I mean, for me, and a few of us, where it's not we were not like that. When we came to Baba, there was anyone who would criticize me, I would really be upset about it. Now I'm not, or less. So that's the thing. How do we turn off the ego? It takes what, 60 years, or there's no switch to turn it off more easily? No, keep increasing your self-respect. No, I never look at weaknesses, but lack of what percentage of a virtue, right? You get irritated because lack of patience, right? So should I work on getting rid of irritation or increasing my patience? No. So as soon as I came in Gyan, one thing I said, that whatever is lacking, I have to become full in that. So attention is not all the time on our weaknesses, but lack of percentage of a virtue. So if you find that alternative, then actually you are working on your patience, you start working on your tolerance, you start working on your power to merge. So more you work on your virtues and powers, it's a very, very positive way. You are overcoming your weaknesses. And also then see the quality of effort I have, I can help others with that quality. So instead of saying, why you are like this, have more patience, have more love for the souls, be merciful. These are the words which will come out, which will help others also and help me too, because I am doing it in a very positive way. Many, many say, should we correct or not? Should we say or not? I said, we might have to do everything, but the way you do it and what time you do it, you know, instantly if you correct, people get little shocked now, or they don't know now what to do. But at the right time to say right things are always taken as
There is a saying that what you say will be repeated, right? So we have to definitely be careful because, and it's true, because let's say I say something for someone and that person goes back and tell other person, Sister Mohini said it like that. So it won't be very good in relationships, and that person won't like it also. Many people say, tell me, don't tell behind me. Something like that also. So we have to keep to our dignity and keep to our royalty and as much possible loveful relationships, right? Dr. Mohini, thank you very much. I feel I went to a doctor's room today and I'm leaving with proper medicine and proper prescription. So thank you. And I hope I'm not the only one who has this little question about, because I was just checking myself in a subtle way and thinking, is it that even when I try to say, or maybe this was not the right way of doing it, then it came to me and said, oh, but it is criticism. It looks good. It looks like, oh, he's presenting nicely right and wrong, but actually it is a criticism. So thank you for your yuktis, and I will remember Dr. Mohini, and hopefully other people feel they got also free prescription tonight, and they say, oh, it's good Eric asked the question, that they also have prescription. And I know Dr. Mohini will give me Toli too, so this is lovely. Thank you. Yeah, 2 tolis are there. We haven't opened it or tasted, but they look very good. Okay. Thank you. You're not missing India, right? You're happy in New York? It's okay. You're not thinking of going back to India now? I will go back, but it's the drama, no? The war began, and it's good we came back here because all the activities have almost stopped. And I don't know if you know, once in a month we do a Zoom call for 1.5 hours, Jayanti and myself, with all the teachers of India. So few thousands join, and then we also added Madhubal Nivasis. So we take a topic, we take questions, and so today we had from 10 to 11:30. So we are trying to see that location doesn't matter. I don't think we could gather 5,000 Bharat teachers together. And now we are on Zoom, 5,000 of us sharing. And so I think that we're trying to make it not India and New York, but we're making it like world, Global. international. It's lovely. That brings satisfaction to us that if we were sitting there, we would not have done this, what we are doing from here. We're very happy when we feel you close. That's why I'm asking. We feel happy when we see you closely. And we look forward to, some of us will see you in Peace Village in the next few months. So very, very lovely to come and see you. So thank you, Mohini Didi, Dr. Mohini. And then I'll tell you how I'm doing next week. Sister Mohini is better. I know. Only tonight you are Dr. Mohini for me. Thank you. Om Shanti, everyone. Oh, Shanti. Om Shanti. Thank you. Just to let you know, Eric Bhai, that Didi already has gotten the degree of doctor in Madhuban last year. So She deserves many, 108 doctor degrees. right. But we generally don't use that title. Some of them use, but anyway, thank you so much. It was a wonderful chit chat. And tomorrow is a big day for all of us. It's a Mother's Day. Happy Mother's Day. So we will have a schedule Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed by Hindi Sakar Murli, followed by meditation English Avek Murli.
Then there will be a little break, so we will keep Zoom on with the meditation, and then 10 o'clock Mohini Didi will be joining for the Bhog offering for Mother's Day special, and that will be in Global Harmony House. So Avyakti Parivar will be joined together with it. So you all are welcome to join. It will be very special Bhog offering, then Baba's Bhog message, and then we'll have a little celebration also, and then Tholi blessing Brahma Bhojam. So that's the program for the morning. And then in the evening, 6 o'clock, but he will start, and then spotlight drishti sharing, and then Hindi series, English series, and chit chat. But also, it's Mother's Day special, so we will have also something little special, and of course, we will do spotlight drishti in the end, and we'll enjoy together with the angelic dance. So that's the program for tomorrow. And then now, let's remember Baba and take drishti from Didi. तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। सागर सा लहराए, मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए। खुशियों की खुराक भर के, ओ खुशियों की खुराक भर के, हर गम को मिटाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। झिलमिल झिलमिल जुगनू जैसे चमकता चारों ओर, अनहद नाद गूंजे कानों में, ना कोई जग का शोर। वतन की वो मुलाकातें, वतन की वो मुलाकातें हर पल याद आती हैं।
से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। चमन में खिलते लाखों चिंतन के स्नेह सुमन, सिहर जाता अंतर मेरा दुआओं से भर के दामन। जिंदगी के आंचल को, जिंदगी के आंचल को गुणों से ऐसा सजाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता हो, नैन से नूर छलकता मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। शांति। मदर्स डे। मदर्स डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू दादा। ओम Adopt the personality of spiritual royalty and purity. Wear your crown of the light of purity. The power of purity makes you supremely worthy of worship. You transform this impure world with the power of purity. The power of purity cools down souls who are burning in the fire of vices. It liberates souls from the bondages of vices for many births. From the copper age onwards, this world has been supported a little on the basis of purity. Know the importance of this and wear your crown of the light of purity.
रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधनों से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। ओम शांति।